हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ACME कॉमर्स एकेडमी। आज के सेशन में हम कवर करने वाले कॉल्स ऑन शेयर्स, सेक्रेटरी प्रैक्टिस स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 3 इश्यू ऑफ शेयर्स। सो व्हाट आर कॉल्स ऑन शेयर्स? व्हेन कंपनी इश्यू शेयर्स, कंपनी पूरा का पूरा अमाउंट एक साथ कलेक्ट नहीं भी करे, मतलब पूरा का पूरा लमसम में पेमेंट नहीं लेगी। कंपनी क्या करेगी? कंपनी विल कलेक्ट मनी इन इंस्टॉलमेंट्स एज एंड व्हेन कंपनी नीड्स मनी। जब भी कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, कंपनी में मेक अ कॉल और मैं डिमांड द कॉल मनी। सो उसको हम बोलते हैं कॉल्स ऑन शेयर्स। सो सी, एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, अ कंपनी में स्टेट द इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर्स इज टू बी पेड इन इंस्टॉलमेंट एज एंड व्हेन कंपनी डिमांड्स फॉर। मतलब कंपनी जब भी डिमांड करेगी शेयर होल्डर को ये कॉल का पेमेंट करना। सो व्हेन कंपनी demands the shareholder to pay part or full amount of the balance amount unpaid on shares, it is called as call and share. मीन्स जो भी बैलेंस अमाउंट है, अनपेड अमाउंट है, ये कंपनी जब भी डिमांड करेगी उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स ऑन शेयर्स। नाउ नॉर्मली कंपनी क्या करती है? एट द टाइम ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर, इन द बिगिनिंग कंपनी क्या डिमांड करती है? एप्लीकेशन मनी शुड बी 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, मिनिमम अमाउंट as per provision of Companies Act 2013, and as per SEBI guidelines, it is 25% of the face value. So company in the beginning 25% collect करेगी, then once the shares are allotted, then company may demand allotment money, and after allotment जो unpaid amount है, this company may demand in installment like first call money or second and final call money. So besides the application money and allotment money, if a company demands the balance unpaid amount on shares, it is called as call on shares. The unpaid amount on partly paid up shares is liability of the shareholder. जो partly paid up shares है, like for example, face value 10 है, company has already collected 3 rupees on application and 3 rupees on allotment. So 6 rupees हो गया. Now 4 rupees is unpaid. Now company may demand this money in first and final call, और कंपनी उसको दो पार्ट में डिवाइड करेगी, 2 रुपीज़ के दो कॉल्स, फर्स्ट कॉल एंड देन फाइनल कॉल। नाउ इफ शेयर होल्डर्स आर अनेबल टू पे द मनी, शेयर होल्डर्स ये पेमेंट नहीं कर पाए, इन दैट केस कंपनी को राइट है टू फॉरफिट द शेयर्स। फॉरफिट मीन्स कैंसिल द शेयर। नाउ इसको फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इसके लिए बोलते हैं कि व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, शेयर होल्डर ने जो भी पेमेंट किया है पहले, लाइक एप्लीकेशन मनी एंड allotment money, that is forfeited. Forfeited means foregone, gone. उसमें से शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिले. So it is a profit for the company when shares are forfeited. Now call on shares, who can demand? Board of directors. So call can be made only by the board of directors in the interest of the company. Company has to send a call letter or call notice to the shareholders, asking them to pay the call money and give them minimum 14 days notice to pay the call money to the company's banker. So जिस दिन कॉल मनी डिमांड किया गया है उसके 14 डेज में शेयर होल्डर्स ने उसको कंपनी के बैंकर्स के पास डिपॉजिट करना है. नो कॉल कैन बी मेड फॉर मोर देन 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर. सो मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 25%. सो 10 रुपीज की फेस वैल्यू, तो 2 रुपीज 50 पैसा इज द मैक्सिमम. द गैप बिटवीन टू कॉल्स शुड नॉट बी लेस देन 1 मंथ. दो कॉल्स के बीच का जो टाइम गैप है, इट शुड नॉट बी लेस देन 1 मंथ, इट शुड बी मोर देन 1 मंथ. एक महीने से ज्यादा होना चाहिए. And this provision is made in articles of association of the, so this is called as calls on shares. Calls on shares means कंपनी जब डिमांड करेगी टू पे द कॉल मनी आफ्टर पेइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, जो अनपेड अमाउंट है ये कंपनी कलेक्ट कर सकती है थ्रू कॉल डिमांड, इसको हम बोलते हैं कॉल मनी. सो कंपनी जब भी डिमांड करेगी, कंपनी नोटिस भेजेगी टू द शेयर होल्डर्स, विद इन 14 डेज शेयर होल्डर्स को कंपनी को ये पेमेंट करना है. In case shareholders are unable to pay the money, in that case the shares will be forfeited. उसके बाद में the call money should not be more than 25% of the face value. Face value का 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. And the gap between two calls should not be less than 1 month. And these provisions are made in articles. तो अभी हमने calls on shares पढ़ा. I hope इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं फोरफीचर ऑफ और सरेंडर ऑफ शेयर्स.